बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वंस अगेन हिशाम भाई के अकाउंट को हैक करते हुए और उसको यूज़ करते हुए वी आर बैक लाइव ऑन लिंक्डइन, ऑन फेसबुक एंड रेस्ट ऑफ द पेजेस। वेरी फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह मिस्टर जांबाज खान सर ने, काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान इन वैनकूवर हैज जॉइंड अस। मैं एक छोटा सा ब्रीफ जो है शायद उनके बारे में मैं इनफॉर्मली दूंगा, क्योंकि आप लोगों को सेशन का नॉर्मली फॉर्मेट पता है कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो था ना, मुझे मीर अनवर भाई ने बताया कि जी जांबाज साहब को ना लेट्स लेट्स गेट द यूथ टू इंटरेक्ट विद जांबाज साहब। तो मेरा पहला जो मीर भाई के साथ आर्गुमेंट था ये था, मैंने कहा यार वो अफसर बंदे हैं, और जब उनसे बात करने लगेंगे ना तो ऑब्वियसली जो जब आपने कोट और टाई पहनी होती है ना तो लोग झिझकते हैं, बड़ा मुश्किल होता है इंटरेक्ट करना, बात करना। Fortunately, I had an e-meeting with Jambaz bhai, and then everything got what vanished. मैंने कहा नहीं यार, बंदा बब्बर शेर है, ये और तरीके से चलेंगे। इनके साथ हम फॉर्मल नहीं होना पड़ेगा, और मोर ओवर फॉर्मेलिटी के साथ जो है हमारे क्वेश्चंस शायद इनके साथ हो भी नहीं सकेंगे, क्योंकि we are going to dive into few things which are tough, which are going to be kind of hard, but at the same time, it's going to be all candid. It's going to be all heart to heart. Jamaz, thank you so much, first of all, for Maybe joining. thank you so very much for this introduction. Thank you to thank you to you, Muzal sir, and to Mir Saab as well. It is my privilege and honor to be here. Thank you so much. Sir, पहले तो हम आते हैं मुद्दे पे कि Janbaz Khan as a person himself, despite the fact CG of Pakistan in Vancouver, but as a person himself, we really want to hear it from you first. देखिए जी, my one point is very clear that I am a public servant. एंड सर्वेंट की अगर आप उर्दू ट्रांसलेशन करें तो वो नौकर होता है, और मैं पाकिस्तानी कौम का नौकर हूँ। फॉर दैट आई एम हियर टू सर्व पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो बैरून मुल्क हो, अब्रॉड हो, आई एम एट देयर सर्विस. I am as accessible as anybody. They can call. My phone number is on our consulate's website. My cell number, my WhatsApp number. I am available 24/7. This is so different to hear. ठीक है, we travel, we meet people, but there is always a saying कि यार जो बंदा बाहर बैठा होता है ना सर, ਉਹਦੀ ਧੌਣ 'ਚ सरिया ਹੁੰਦਾ है। पर सर ये आप चेंज क्यों है, डिफरेंट क्यों है, थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डाल दें। देखिए जी, majority of Pakistan's bureaucracy is like me. अच्छा, We are basically the unsung heroes. जो सामने, to be very honest, I avoid projection of myself. सर और मेरे जैसे कम नहीं, बहुत ज्यादा हैं. And despite our issues, Pakistan चल रहा है. And that's a testament to those silent workers, those silent people who work in the background, पसे पर्दा जिसको कहते हैं, unsung heroes. They can be wearing uniform, they cannot be wearing a uniform. They can be doctors, they can be 1199 rescue people, they can be bureaucrats, they can even be people who are not in the public service. True. So there are a lot of Pakistanis जो कि खामोश अपने काम से काम पर्दे के पीछे लगे हुए हैं, और अल्लाह पाक के तफैल और फजल से ये मुल्क चल रहा है जी. And there is a bright future. सर एब्सोल्युटली बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, और मजे की बात ये है कि बिलखुसूस जब इतनी पावरफुल स्टेटमेंट आती है ना उन लोगों से जिनके साथ हमारा एक गैप है, पता नहीं क्यों है, तो इट क्रिएट्स यू नो व्हाट, इट क्रिएट्स अ ब्रीज फॉर अस। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। सर आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे हमारे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है, ऑडियंस इज मोस्टली यंग पीपल। ठीक है, ये पाकिस्तान का वो रॉ टैलेंट है जो यहाँ पे अवेलेबल है। स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान के स्ट्रांग है व्हेन इट कम्स टू द यंग पॉपुलेशन। we are among top 5 when it comes to technology across like freelancing on Upwork or any other platforms. When it comes to the tech stack, recently IT Minister sir was on Davos, और हमारे चेयरमैन पाशा भी थे वहाँ पे, तो they said that this last 2 months में we had a 33% growth in technology exports.
मेरे लिए बड़ी वो एक तो खुशाइन चीज़ भी है हमारे लिए और शायद अ, ये पॉजिटिव वो नोट्स हैं जिसके साथ वापस वी विल स्टार्ट गेनिंग अ कॉन्फिडेंस। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लव टू हियर अबाउट योर पर्सनल जर्नी। ठीक है, कुछ बताइएगा कि and people to get insight on the importance of you being there, how being you as a council general is someone who can actually be the right connector for this you know what country for people here. देखिए जी, brief little journey in the foreign service of Pakistan, Turkey, uh, India, Berlin, Paris, uh, Sri Lanka, and now here in Vancouver. Basically, the Consul General's job is the consular services and to be a catalyst for trade and commerce, building bridges, irrespective of politics, based on economic मोर्टार एंड ये जो आपकी ब्रिक वर्क होता है वो कमर्शियल एंड इकोनॉमिक्स होता है। तो एज अ फॉरेन सर्विस ऑफिसर हमारी जो प्रिंसिपल जॉब है इज टू बिल्ड अ ब्रिज। once we have built a bridge, then Ministry of Commerce, Ministry of other ministries can walk across into other countries, continents. So we are the bridge builders, politically, बेहतरीन। economically, and from community and diaspora point of view. And as you know, bridges take the hardest pounding of feet when they are walked upon. But nonetheless, Absolutely, without a but doubt. nonetheless, we are more than happy. It's our privilege to be that bridge. Amazing, amazing. Thank you so much. So being a very passionate advocate of entrepreneurs on both sides, like even on the Canadian part or on the Pakistani part, you're working on a lot of initiatives. You've worked on a lot of strategies. Sir, we want to hear it from your side. First of all, about the entrepreneurs there on your side, like in the Canadian zone, the Pakistani ones, khas taur pe. What is your experience with them? How do you see them, like young talent or the ones who have spent time? देखिए जी, इसके लिए मुझे आई हैव टू टेक बैक स्टेप बैक टू आपको इसको ठीक तरह बताने के लिए हमारा यह मैंडेट वाज काउंसलर सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ट्रेड और कॉमर्स के जो यहाँ पे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर या कमर्शियल अटैचे थे, दे वर रीलोकेटेड टू अफ्रीका। और जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान डजंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू हैव दीज ऑफिसेज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो मैंने आउट ऑफ बॉक्स एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट किया एंड विजन वाज क्रिएटेड। व्हाई नॉट गेट द पाकिस्तानी diaspora here, including the indigenous people, like for example the local Canadians and everything, into a mechanism जिसका focus should not be community based but business based, economics, commerce, Okay, okay. trade. So यहाँ पे एक खातून है मिस बुशरा रहमान, with her help and with her colleagues and team, जिसमें राबिया दस्तगीर भी हैं. By the way, this entire initiative is being led by Canadian Pakistani women. Then there are Amazing. directors like Panora के chief executive हैं. It's a huge mining company. लुकमान साहब हैं, मीर साहब इसके अंदर involved हैं. He's a director, and then Usman Ghani Saab, he's a legal director in organization ka, and Sohail Malik Saab is in Pakistan, and he is part of Federal Chamber of Commerce, and but he's also our Secretary General of this association in Pakistan as well. And Nice. this association was created about 1.5-2 saal pehle, and this association, without using any fund from the government of Pakistan, not a penny, conducted first of its kind of expo in Vancouver for Western Canada and Northwest USA. This Amazing. organization is going to using the same principle without spending a single penny of the people and the government of Pakistan, is going to hold a Pakistan Fashion Industry Expo on May 10th and 11th. And they are going to hold their Nice. second trade expo in September, which will be almost double the size which was done the first time. So, Amazing. answering your question,
Now, this organization is not only concentrated in your stereotype business like textile and surgical goods and sports goods and all, it has diversified to fintech, to Amazing. information technology, both hardware and software, both user and backend. Mir Saab is a shining example of that thing with you. You know him very well. So he's our director of fintech and infotech within this organization. This further has diversified to tourism. Tourism has been further diversified into not only tourism per se, classical, hunting, religious. This year, about from Vancouver alone, there was a Sikh Yatri Jatha for about 300 350 log Pakistan gaye. And this is Wow. despite all the negativity which people keep talking about Pakistan. कि जी पैसा True. नहीं है, जी against a determined will, there is no obstacle. I refuse to believe कि जी अगर आप हिम्मत करें और काम ना हो. ठीक है, आप 100 कदम प्लान किया है, 100 नहीं चलेंगे, 10 तो हो जाएंगे ना. Every stone matters, every brick matters. And if it is laid correct, an institution is an institution takes birth, which is then for generations. So my personal compliments to Pakistan Western Canada Trade Association, which has done this thing. And this is an organization which is under the patronage of the Consulate General of Pakistan in Vancouver. And we have been able to achieve, with the kind graces of Allah Ta'ala, what I have told you, without spending a penny from the public exchequer of the government of Pakistan or the people of Pakistan. Amazing. Like this is something which gives, you know what, ये हमारा मोरल हाई करता है. और एक चीज सर हमेशा हम सुनते हैं, लाइक पाकिस्तान से काम करना है, पाकिस्तान में काम करना है. यार ये कनाडा से, यूएस से, यूरोप से, यूके से, यहाँ से पाकिस्तान पाकिस्तान पे हम काम नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? लाइक ये हाउ व्हाट इज योर ओपिनियन कि यार इस एक जादू टूने को कैसे खत्म करना है कि वी कैन क्रिएट द राइट ब्रांड ऑफ पाकिस्तान. Who do you think are the right stakeholders to brand Pakistan with the right positivity? देखिए जी, जो आप बात कर रहे हैं, दैट इज वे डाउन द लाइन. आई एम सॉरी टू से, आपकी रूडिमेंट्री फाउंडेशन ही नहीं. You are not training your entrepreneurs as to how to handle the new world order vis-a-vis after the involvement of fintech wrong word, of information technology and what it is playing out as. आप जब ब्रांडिंग की बात करते हैं तो ब्रांडिंग तो आपकी सब ऑनलाइन है. आप स्पेशली आफ्टर कोविड, आप फॉर एग्जांपल कैनेडियन बिजनेस ने अगर पाकिस्तानी बिजनेस से काम करना, वो सबसे पहले जाके गूगल करेगा कंपनी को, फिर उसका Exactly. प्रोफाइल देखेगा, फिर लिंक्डइन देखेगा, फिर देखेगा उसने क्या इवेंट्स किए हैं, कहाँ रिप्रेजेंटेशन की, फाइनेंशियल उसका क्या है, ओवर अबव वो सब चीजें देखते हैं. देन दे गेट इनटू ए बिजनेस विद दैट कंपनी. अनफॉर्चुनेटली आपका बेस ही नहीं पाकिस्तान. बिल्कुल ठीक है, नंबर बिल्कुल वन. ठीक है. नंबर टू, आपके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर ब्रिलियंट. इट्स लाइक पाकिस्तानी हॉकी which has lost because it has gone out of tune with the global world order. True. So आपके entrepreneur have to relearn how to engage the West to do business using the tools of infotech technology. Number one. Number two, बात कैसे करनी. अब यहाँ पे जब मैंने एक्सपो एक करवाया है एंड यहाँ जब लोग आए हैं, they did not know the lingo, the business lingo of the North or the Western Canadian businessman. That lingo has to be taught. It doesn't need to be taught to the chief executive officers which are being trained in LUMS or in IBA Karachi or business schools in Pakistan. Yes, they are. But do you realize that majority of the Pakistani business is a family business run by heritage, by those people who have not gone to IBA, who have not gone to be LUMS or abroad. तो डाइवर्सिफिकेशन का भी कॉन्सेप्ट नहीं. और एक सबसे बड़ा इशू ये है कि जी अगर हमें 1000 रुपया मिल रहा है तो बस ठीक है जी, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं.
अगर आपने बिजनेस को तरक्की देनी है, यू नीड टू चेंज योर अप्रोच, पीरियड. इट्स एज सिंपल एज दैट. सर अगर तो मैं एक चीज़ मैं वैसे सबको बता दूँ कि अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट कि सब ठीक है, तो आई एम सॉरी, वी आर नॉट ऑन दैट ट्रैक। हमने जो बात करनी थी वो मेरे ख्याल में एग्ज़ैक्टली वी आर ऑन लाइन, वी आर एक्चुअली यू नो व्हाट ऑन द राइट ट्रैक फॉर दैट। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे जवाब साहब की बात समझ आती है ना, देखें, he is experiencing all that thing firsthand as a Pakistani who is responsible and have been delegated with the responsibility to lift the image of Pakistan as well as to create opportunities in Canada for the Pakistani people as well. But एक इंसान को जब आप दिस मे गो लाइक कंट्रोवर्शियल, अगर एक इंसान को अगर आप मुर्दा लोग दे रहे हैं ना, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो वहां पे एक मेला लगा सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल। सबसे मुदस्सिर इम्पोर्टेंट चीज। साहब, सॉरी टू कट यू मुदस्सिर साहब, अल्लाह का फजल है, देर आर नो मुर्दा लोग. देर आर, this is again an image. Sorry to correct you. If there is a सर will, there is a way. Against a determined effort, the wall gives way. अब आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल छोटा से दे दूं. Right now there is a delegation coming in from Punjab for the first time to Alberta and British Columbia to discuss whole plethora of business exchanges, including exporting labor to Canada, with a view बेसिकली with a view to train those boys and girls. Hopefully अभी वो कुछ decide नहीं हुआ. Hopefully to get those boys and girls trained in Pakistan in a way that once they land in Canada, their equivalence is immediately accepted and they get into the job market. सर दिस इज साढ़े अमेजिंग। 4 लाख लोग per year Canadians को चाहिए, but only those will get in who qualify. So we need to change our policies back home. एंड उस पर अल्लाह के फजल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काम कर रही है. आपके पब्लिक सर्वेंट्स उसको दे आर फॉलोइंग इट एग्रेसिवली. मैं इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि देयर इज मुर्दा पीपल. इट ऑल डिपेंड्स सर अपॉन द विल. इफ देयर इज अ विल, सर देयर इज अ वे. सर थैंक सर थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी, आई एग्री। मेरे मैं जस्ट क्लैरिफाई कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि यू नीड टू हैव योर बेसिक्स कवर्ड। जब आप कहीं पे जा रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ एग्जैक्टली. लोकेलिटी दैट इज, कल्चर कैसा है, लोग कैसे हैं, क्या वहाँ पे लोकल मार्केट कैसी है, इकोनॉमी कैसी है। यू कैन नॉट जस्ट गो ब्लाइंडली एंड एक्सपेक्ट कि वहाँ पे चार लोग खड़े होंगे बाहर लेके और आपको कहेंगे कि यार ये देखो ये भी बिजनेस पड़ा है, ये भी बिजनेस पड़ा है। यू नीड टू एग्जैक्टली. अंडरस्टैंड एग्जैक्टली. व्हेनेवर यू आर देइंग, यू नीड टू गो प्रेप। सर एक एग्जैक्टली. छोटा सा सवाल है जी कि प्लीज. in the context of like cultural exchange, what initiatives can we take to promote Pakistani culture, Pakistani rich culture, cultural heritage in Vancouver and build strong people-to-people connection? देखिए जी, अभी लाइक आई सेड, द पंजाब गवर्नमेंट की डेलीगेशन आ रही है. नाउ जी। the province of Punjab will be engaging the provinces of British Columbia and Alberta. ट्विन सिटी के प्रोस्पेक्ट डिस्कस हो रहा है. सिस्टर प्रोविंसेस के वो सिस्टर सिटीज का, सिस्टर प्रोविंसेस का हो रहा है. उसमें कल्चरल एक्सचेंज भी होगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ये देखें ना, 10 और 11 मई को देयर विल बी ए पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री एक्सपो, जिसके अंदर पाकिस्तान से डिजाइनर्स आके पाकिस्तानी कल्चरल डिजाइन्स को यहाँ पे इन कोलैबोरेशन विद द इंडिजिनस people also, not only the typical Canadians, Pakistani or immigrant, but even indigenous को भी हम on board ले रहे हैं उसके ऊपर. और Amazing. और the Pakistan Western Canada Tourist Association has recently conducted MOUs with the SME Finance Forum of ये जो IFC World Bank का है उसके साथ, to train the chief executive entrepreneurs of SMEs in Pakistan with particular focus for women, in collaboration with this organization as well as ये सलमान सूफी साहब की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स पे फोकस कर रही है. सो इससे Amazing. ज्यादा कल्चरल और क्या चाहते हैं. So diversity भी है, inclusion भी है, women empowerment भी है, opportunities to learn.
as a women and being the one leading it, हमें से पहले राबिया दस्तगीर के साथ हमारी बात हुई थी, तो हमें Abdul Fakir is our director board of textile of Pakistan Western Canada Trade Association. Another brilliant woman. सर वी हैड एन अमेजिंग टॉक विद हर। वो जो चीज़ें जो उन्होंने बताई थी, और ख़ास तौर पर पर्सपेक्टिव ऑफ दैट वुमेन एम्पावरमेंट, आप यकीन करें कि वी रियलाइज़ कि यार जिस टाइप का टैलेंट हम मिस कर रहे हैं शायद, वो जब व्हेन यू वो कहते हैं ना कि ज़रा ये ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी, ये मिट्टी वाक़ई बहुत ज़रख़ेज़ है। सर एक दो छोटे-छोटे सवाल ये कि जी please. हाउ इम्पोर्टेंट इज़ कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग फॉर यू? देखिए And जी, in context of people who are coming or who are already there. देखिए जी, सिंपल सी बात है. If you do not do networking, if you do not know जिसे कहते हैं collaborations, you won't learn anything. ठीक है। Networking, आप देखें, that's what I don't understand our people at times is they must be taught this thing. Even SMEs, people who don't go, देखें, understand something. IBA, LUMS, all the universities in Pakistan जो वो produce कर रहे हैं as business executives, they are critical part of our economic, commercial, trade push both locally and internationally. However, ठीक है। however, almost 90% of your businessmen have not gone to these institutions. Agreed. I see So it. those 90% need to be trained and taught कि जब आप बाहर जाते हैं, apart from getting your this business deals and everything, please get into networking. अच्छा, एक तो ये हो गया. This has lost its sheen after the COVID. अब तो ठीक है। ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं, वेबिनार्स हैं, कनेक्शंस हैं. These gentlemen and ladies have to be technologically suave, यानी कि they need to be तकनीकी तौर पे, इंटरनेट के तौर पे, इंफो टेक्नोलॉजी के तौर पे उनको पता होना चाहिए, उनको सीखना चाहिए कि ऑनलाइन नेटवर्किंग कैसे हो सकती है. अच्छा, ठीक ऑनलाइन है। नेटवर्किंग में आपको बहुत सारे इश्यूज होंगे. देयर विल बी पीपल हु विल बी अनसब्सटेंशिएटेड, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड आप पाशा को भी रिप्रेजेंट करते हैं, देयर आर वेज एंड मींस विद इन द सिस्टम बाय व्हिच यू कैन वेरीफाई कि एक कंपनी की वर्थ है कि नहीं है. इज इट अ वायबल कंपनी और नॉट. लास्ट केस सिचुएशन, सेंड एन ईमेल टू योर काउंसलेट और योर एम्बेसी के जी ऑन ग्राउंड जाके चेक करके बता दे. हम इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं. खूबसूरत, अमेजिंग। इसीलिए आपके टैक्सेस की वजह से हमें तनख्वाहें और हम जो यहाँ लेके बैठे हुए हैं, वी हैव टू जस्टिफाई एवरी सिंगल पेनी ऑफ इट. और अगर आप हमें ये नहीं बताएंगे तो फिर मेरे जैसा आदमी उठेगा और पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड एसोसिएशन बना के खुद ही काम शुरू कर देगा. सर सो हैप्पी टू हियर दैट। सर मुझे ये बताएं, एक छोटी सी छोटे-छोटे सवाल है मेरे। वो ये कि ये जो यंग पाकिस्तानी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान में, जी, सर इनको किस किस्म के स्किल्स या किस किस्म के ग्राउंड नॉलेज आपको ऐसा लगता है कि यार ये 3 से 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर दिल लगाकर काम करो इफ यू रियली वांट टू सक्सीड, बिकॉज़ ये वो डिफरेंशियल है या ये वो डेल्टा है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता या किसी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ आपको प्रॉपर्ली नती नहीं होने देता? देखिए जी, सिंपल सी बात है. हर चीज की एक फाउंडेशन होती है. पहले तो जी, आप इकोनॉमिक्स को समझें कि इकोनॉमिक्स है क्या, फिर कॉमर्स समझें, फिर ट्रेड समझें, फिर इन तीनों को देखें कि ये ऑन ग्राउंड जब अप्लाई करती हैं तो इनका रिएक्शन क्या होता है इन सब्जेक्ट्स का. जब आप ये दो चीजें, रियलिटी और थ्योरी को जब आप समझ जाएंगे, उसका बाद द की, एंड आई रिपीट, द की इज इन्फोटेक. जब तक आपको नेट के ऊपर अबूरियत नहीं आएगी, कीपिंग इन व्यू योर बिजनेसेस, क्योंकि ठीक है। बिजनेसेस कई किस्म के हो सकते हैं. टेक्सटाइल भी है,
इंजीनियरिंग भी है, टूरिज्म भी है, लेदर भी है, सर्जिकल भी है, अपैरल, आई मीन देयर कुड बी 1,000,001 बिजनेसेस। ऑयल भी है, पाइपलाइन भी है, माइनिंग भी है, माइनिंग गोल्ड कॉपर जेमस्टोन्स ये भी है, ऑयल भी आ जाता है उसमें। अब उन चीजों को मद्देनजर रख के यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द ट्रेंड्स आर, एंड वी आर, हम तो जनरेशन एक्स हैं, ये जो नई जनरेशन हैं, ये सारी चीजें आपकी नेट पे पड़ी नहीं। Go to it, find out, understand the trends there, understand the dynamics there. That said and done, once you are fully prepared, the key is networking. First learn how to do business, relearn how to do business with the West, keeping in view the new infotech tools, and then develop the ability and the confidence, word is underline it, confidence, to diversify. matlab wo you need to understand, you mid path, you're a businessman, you should be ready to change. If an opportunity comes for a person who is in textile and he finds an opportunity, let's say in a surgical thing or sports goods, he should be able to, you know, diversify. वो एक रट में ना फंसे रहे आप कि जी अब मैंने एक फैक्ट्री लगा ली है और इसमें लेदर है सिर्फ, और अब मैं सिर्फ लेदर प्रोडक्ट्स करूंगा। व्हाई? यू कैन डाइवर्सिफाई टू टूरिज्म, यू कैन डाइवर्सिफाई टू होटलिंग, यू कैन इवन डाइवर्सिफाई, बिकॉज देखिए इंसान एक बड़ा वर्सेटाइल क्रीचर है। पीपल स्टार्ट ऑफ वेरी स्मॉल, एट द एंड ऑफ द डे उनके पास शिपिंग की कंपनीज भी होती हैं, उनके पास ऑयल फील्ड्स भी होती हैं, उनका पेरेंट बिजनेस वुड बी छोटा मोटा जो होता काम, जिस तरह वो होता है ये जो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ये the other day I was reading that, if I think it's either Elon Musk or somebody else, who is also the world second or third biggest land owner in USA, focusing on beef and logging. Now that is diversification. I mean, I read it, I don't know somewhere whether it's true or not, but that's a broad idea of diversification. So diversification, relearn how to connect with the world, understand the fact that the sophisticated business institution trained executives are less, while 90% plus are people who are not from these institutions. So we have to marry those up and take those 90% to do business with the rest of the world. और घबराना नहीं है, इसमें वो घबराने की बात नहीं है कि वो देयर इज समथिंग न्यू ऑन द अदर साइड। चेंज एंड वैरायटी इज व्हाट पुशेस अ ह्यूमन बीइंग, दैट्स द चैलेंज। सर ये तो बड़ी खूबसूरत बातें होगी। अब हमने काफी सारी ना फॉर्मल बातें कर ली हैं, लोगों को समझ आना शुरू हो गई है। ये ये जो यंग टैलेंट से पाकिस्तान में बैठा हुआ है ना, ये वो टैलेंट है जो आज की डेट के अंदर यूएस की टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज को सर्व कर रहा है। ये वो टैलेंट है जो सऊदी टेलीकॉम से लेके बैंक ऑफ अमेरिका के बहुत सारी सर्विसेज को पाकिस्तान से बैठ के हैंडल करता है। ये वही टैलेंट है जो बहरीन, कुवैत, मीना रीजन, मिनाप रीजन, इवन ऑन द एफ्रो जोन, वहाँ पे जाके चाहे उनकी स्टॉक एक्सचेंजेस हो, चाहे उनके बैंक्स हो, चाहे उनके हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पे जाके अपनी प्रोडक्ट्स को डिप्लॉय कर रहा है। सो एक चीज तो हमने बिल्ड कर ली है, और वो ग्राउंड ये है कि इस जमीन पे टैलेंट बहुत है। ठीक है, अब आते हैं एक बड़े क्रूशल और बड़े क्रूल किस्म के उस प्रॉब्लम की तरफ जिसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। सॉरी टू से देयर इज नो ब्रेन ड्रेन। मैं बाहर बैठा हूं, आपके जितने लोग पाकिस्तान से आते हैं, ये जिनको आप ब्रेन्स कहते हैं, दे आर लिंक्ड लाइक अ स्ट्रॉन्ग चेन विद पाकिस्तान। वो जिधर मर्जी चले जाएं, 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल, जी मैं पाकिस्तान जाना है, आप उनके रेमिटेंसेस देख लें, पाकिस्तान जा रही। बिल्कुल ऐसी। मुझे एक चीज बताइए, दैट्स ऑफ दिस पॉइंट, एंड forgive me for my age and everything, and I'm not right talking off the script or anything, so please bear me up. Sir, आपने लम्स देखे? लम्स?
Lums. जी जी सर, बिल्कुल देखा है Who made it? सर। Uh, It's अब not. मैंने It's मेरे it's not a government. It is some business नहीं entity. सर, it's actually it's actually an NGO, like a not for profit. It's not totally an NGO, but it's a not for profit institute. Okay. Thank you for filling that up. And I believe Pasha is also like that. Absolutely, sir. Have you created an institute like LUMS for your field? Just a food for thought. माशाल्लाह नहीं सर। आपके जितने मेंबर्स हैं द और जो वो कमा रहे हैं हम्म। globally in dollars, have you made an effort to create an institution like LUMS feeding your business, this stream of business? Have you सर even considered मैं सर मैं अगर आप इजाजत दें तो इसको छोटा it? सा इधर मैं एक छोटा सी एक बात जरूर करूंगा सर। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मैं बहैसियत पाशा मेंबर, पाशा सी मेंबर, मैं इस चीज़ को बड़े बहुत फ़ख्र और बड़े खुशी के साथ यकीन करें कि मुझे बताते हुए आपको आपको बताते हुए और खुशी हो रही है, क्योंकि ये सवाल आपने रेज़ किया है कि इन कोलैबोरेशन विद सर पीएससीबी, one of the Canadian company in Pakistan called Contour I know. और पाशा, सर इन 3 लोगों ने मिलके पाकिस्तान में एक प्रोग्राम किया वेयर वी ट्रेन्ड 4000 बच्चे इन द फर्स्ट लेग, ठीक है? और उन 4000 बच्चों को जो हमने ट्रेन मैं सिर्फ इन 4000 बच्चों की इनिशियल ट्रेनिंग थी टेक के अंदर। हमारा एक्सपेरिमेंट उसमें ये था कि यार एक तो सिर्फ टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग के साथ एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि इन बच्चों की जब तक इन बच्चों की सॉफ्ट स्किल्स पे काम नहीं ना करेंगे, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं करेंगे, इनकी कोलैबोरेशन स्किल्स पे काम नहीं करेंगे, यार चीज़ें सही नहीं हो सकती। सो 30% ऑफ द कोर्स वाज़ अराउंड दैट। उसके साथ हुआ ये कि माशाल्लाह 64 टू 70% ऑफ द बच्चे आफ्टर दैट बूट कैंप गॉट ऑन जॉब्स इमीडिएटली, व्हिच वाज़ बाकी के जो 30% थे उसमें से a good 15% started their own businesses as well. इसके साथ एक जो ट्रेंड चल गया ना, वो बड़ा खूबसूरत चला। मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन पाकिस्तान जो कि टेक्नोलॉजी कंपनीज थी, उन्होंने छोटे-छोटे कंसोर्शियम्स क्रिएट किए और ये बच्चे जो मल्टीपल यूनिवर्सिटी से, मल्टीपल एकेडेमिया से निकल रहे थे, कंसोर्शियम से मुराद है मेरी गेम ट्रेन, वन ऑफ द वेरी अमेजिंग गेम्स के ऊपर और टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग्स के ऊपर। Then Gaper.io, one of the amazing boot camps which is going on here. Then Contour itself कर रहा है boot camps. Then CureMD, one of the biggest organizations here in Pakistan. सर इन सब ऑर्गेनाइजेशंस ने ना, वो कहते हैं ना कि कतरा कतरा वो वो डालना शुरू कर ही दी है। मैं जानता हूँ कि अभी उसका दरिया नहीं बना, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं, आप यकीन करें, मुझे मुझे बताते हुए फख्र होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट हमारी सोच उस तरफ ज़रूर चल गई है। लेकिन बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, एज़ एन इंस्टीट्यूशन हम कुछ नहीं बना सके, लेकिन एज़ अ फ्रेमवर्क उसमें अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया। Mudassir Saab, please take my message to Pasha. सर, And when I say take my message to Pasha, is my message to all the honorable, true patriotic Pakistanis of this organization कि सर, प्लीज अपने प्रॉफिट में से certain earnings निकालें and create a college, हुँ, a university like LUMS for your stream of students. जो एग्रीड। आपने एफर्ट किया है, I commend it, I compliment it, and it's brilliant, but it seems to be a one time effort. ठीक है, उसके रिजल्ट्स निकल रहे हैं, आपने एक पत्थर फेंका है, there are now waves in it. It is time that Pasha should take the lead and build a mechanism, an institution. Like with grace of Allah Pak, I was able to create Pakistan Western Canada Trade Association with the help of its present board, जो कि है जिसमें Madam Bushra bhi is the president. Please create mechanisms and institutions एग्रीड। which do not need individual presence. They are strong enough to run on their own, irrespective
irrespective who's there and who's not. आप उसको पैसे दे के इकट्ठे करके बनाएं, जमीन लें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, उसमें आप प्रोफेसर्स डालें, टीचर्स डालें, उसको फंड करें, आप देखेंगे 2-3 साल में इट विल बी रनिंग ऑन इट्स ओन लाइक लम्स इज. Agreed. बिल्कुल ऐसी है. और माशाल्लाह, टू बी वेरी ऑनेस्ट पाशा साहब, अपना मुदस्सिर साहब, यू विल बेयर मी आउट. पाशा इज प्रॉबेबली, आपकी जो मेंबरशिप इज प्रॉबेबली द मोस्ट मनी मेकिंग segment of business of Pakistan in 3.2 बिलियन in डॉलर सर. in foreign currency. सर बिल्कुल ऐसी है. मैं So आप यकीन करें just a कि food for मैं thought. Please सर take my message to Pasha. जी, If one day your great organization does that, I will have brief consulates that I have served this country for 34 years now, or whatever service is left, and I have a small little bit of input towards this thing. I will die a happy man. As a सर public आप servant, इंशाल्लाह ताला as a public you servant, will see that मैंने इंशाल्लाह. अपनी नौकरी का हक अदा किया. Next question, सर you sorry. will see I that. get a bit सर you will emotional, see but that. सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं देखिए, आप हमने मैं वैसे सबको वैसे बता दूं, मैंने जहाबाज साहब से ना एक बात मैंने बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट की थी. मैं कहा सर देखें वहां पे उन्होंने फॉर्मल नहीं होना, ठीक है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा भी फॉर्मल चल रहे हैं. बट सर एक अच्छी चीज ये है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई सल्यूट योर जज्बा. सेकेंडली सर मैं आपको ना एक चीज की यकीन दहानी यहाँ सबके सामने करवा रहा हूँ. वो ये है कि हिस्टोरिकली आई नो कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मैच्योरिटी टाइम होता है, ठीक है. पाशा इन लास्ट 1.5-2 years अगेन हैज रेज्ड अ बार, ठीक है. इससे पहले भी बहुत सारे बेहतरीन किस्म के लोग इसमें थे, ठीक है. हमारी कुछ कोताहियां भी होंगी, आज भी हमारी कोई कोताहियां हैं या होंगी जो कि जिसको हम कोशिश करेंगे कि ओवरकम करें. जो अच्छी चीज़ है ना सर, वो इस टाइम पे ये है कि एग्ज़ैक्ट जो आपके जज़्बात हैं ना, ये पाकिस्तान में बैठे हुए हर टेक्नोलॉजी के ज़ोन के सीईओ के हैं, ठीक है? यही एग्ज़ैक्ट जज़्बात एकेडेमिया के अंदर बैठे हुए हमारे हर एक उस्ताद के दिल में भी हैं, ठीक है? मैं उसकी छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ये देता हूँ कि इस आज की डेट के अंदर सर यूनिवर्सिटी का एक एक ना बहुत पुराना रोना-धोना था इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस प्रोग्राम इंडस्ट्री वो बड़ा ये वाला ना हमने ये वाला ढोल बजाया इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस प्रोग्राम का। सर वो ढोल बजाते-बजाते ना आहिस्ता-आहिस्ता ये हुआ है कि वो ढोल वाक़ई बजना शुरू हो गया है, ठीक है? एकेडेमिया ने इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री ने एकेडेमिया के साथ वो लिएज़ॉन्स करने शुरू कर दिए हैं, जहाँ पे नैवटेक के थ्रू फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट के अंदर नैवटेक ने जो अपने प्रोग्राम्स ट्रेनिंग के बच्चों के लिए लॉन्च किए हैं, उसके अंदर वो स्कूल के टीचर्स को उठा के नहीं कह रहा कि मेरे बच्चों को टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दो। वो कह रहा है जी आपने इंडस्ट्री के डेवलपर्स, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर्स, सीनियर डिज़ाइनर्स, एआई एक्सपर्ट्स, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स को लाएँ और उनके थ्रू इन बच्चों को ट्रेन करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी एकेडेमिया लेगी, उसकी फुलफिलिंग और उसका गैप टेक्नोलॉजी के एलिमेंट से इंडस्ट्री लेगी और उसका जो लिएज़ॉन क्रिएट करेगी वो गवर्नमेंट करेगी। सर मेरे ख्याल में ये जैसे आपने फरमाया ये वही चीज़ें हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता इट्स गोइंग टू बी अ स्नोबॉल इफेक्ट. ये चीज़ें चलेंगी आहिस्ता-आहिस्ता बट डाउन द रोड इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह I am very positive and with your thoughts I am literally like I have a blast of positivity now कि ये मुदस्सिर होना साहब, है. मुदस्सिर साहब, एक चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा. टाइम वी डोंट हैव. Agreed. सिंपल बात है. Build this institution like lumps for Correct. your stream of business of infotech technology. Build it. You should have built it 2 years ago, 3 years ago, 5 years ago. Pasha is already late. We are Agreed. already Yes. late. And I tell you something, that the public sector, which is जिसको आप हुकूमत कहते हैं या गवर्नमेंट कहते हैं, we design policies for the people. The people have to get up and take control of this country, take control of your future. अगर आपकी business community can get up and create lumps and take up the standard of IBA,
to a level where the world says कि जी LUMS और IBA के students अच्छे हैं, why can't Pasha do it? You can do it with you people like you. I have gone through your board, I've gone through their business profiles. ना आपको पैसों की कमी, ना आपको वो जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल वो कोई इश्यूज है. You are the tip of the sword of the Pakistan. So please, you are already late. मेरी आपको ये सजेशन है, मेरा ये मैसेज पाशा को दीजिए, मेरा ये मैसेज अपनी इन्फोटेक टेक्नोलॉजी के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि पैसे शैसे अपना बिजनेसेस कर रहे हैं, प्लीज टेक इट एज सदका जारिया. You will be doing this. The infotech service of Pakistan be doing a great service to Pakistan by creating this institution. Thank you for this. सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ज्वाइनिंग. मुझे ना ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि जो आप बातें कह रहे हैं ना, ये इतनी सुपर रियलिस्टिक हैं कि अगर इनको इग्नोर करते हैं तो हम वैसे ही गहरी खाई की तरफ चले जाएंगे जहाँ से अगेन निकलना और मुश्किल होता रहेगा. लेकिन द पॉइंट है वी आर ऑलरेडी लेट. आपने बिल्कुल वजह फरमाया, वी आर ऑलरेडी लेट. इट्स नाउ और नेवर. ठीक है, आपके पास हर चीज़ हो सकती है, आपके पास अच्छा टैलेंट हो सकता है, आपके पास अच्छा एकेडेमिया हो सकता है, लेकिन जब तक एक कंसोलिडेटेड एफर्ट नहीं है इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक बड़ा खूबसूरत एक एक आर्मी बनाने की, तब तक इन चीज़ों का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा. देखिए जी, सर देयर इज ये लोग ये कहते हैं पाकिस्तान में देयर इज डार्कनेस. देयर इज नो डार्कनेस. Darkness is when we start thinking towards darkness. हर स्टेप जो पाकिस्तान ले रहा है वो मुस्तकबिल की तरफ जा रहा है, माजी की तरफ वो जा ही नहीं सकता. There's a saying कि जी माजी की तरफ उतना मत देखो बिकॉज आप उधर जा नहीं रहे हो, मुस्तकबिल की तरफ देखो बिकॉज चाहे जैसा भी आप उसी तरफ जाएंगे आप. With people like you, with people like our business community, with people like our infotech stream of business, और जो मैं यहाँ देख रहा हूँ पाकिस्तान का बाहर से, और मैं अब कहते मैं बाहर बैठा होता हूँ, मैं आई एम अ ब्यूरोक्रेट, मैं पाकिस्तान में भी वो करता हूँ. You have no idea what Pakistan is. There are many things which cannot be discussed on this forum, and we can discuss later on separately. But I assure you कि जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, it's very bright, very bright. ये जो छोटे छोटी आप पहाड़ चढ़ते हुए किसी पत्थर पे पांव स्लिप होता है, फिर आप दूसरा पांव रखते हैं. कभी हाइकिंग की है सर? हाइकिंग में जब आप चढ़ते हैं तो आप फ्लैट ग्राउंड पे चल रहे होते हैं. नहीं सर. जब आप चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं पत्थर लगते हैं. बिल्कुल सर. Do you stop? Never. Until you get to the Peak. There you go. We will get there. I assure you. You have my full guarantee on it. By the grace of Allah Almighty, Pakistan will take its rightful place. It will take some time. Abhi hum It will take some time, but in the Committee of Nations, we are just 70 years old, 70, 76 years old country. There are countries here which are thousands and thousands of years old. And we have become what people did not even expect us to become. So there is a very bright future. We need people like you, organizations like Pasha, organizations which created LUMS, organization which is supporting IBA. By the way, IBA is a government agency, but it has a major private PPP segment yes, which made its credibility. So please don't feel disappointed. The future is very bright. And people like you, me, and the people who are listening to this program will make sure that it is bright with God's grace. Sir, down the road ना इंशाल्लाह ताला मैं इंशाल्लाह मैं मेरी कोशिश होगी कि मैं एक प्रोग्राम करूं आपके साथ उन स्टार्टअप प्रोग्राम्स के बच्चों का. not to pitch any idea, simple, but I really want them to hear your thoughts. अभी तो अल्लाह करे कि वो बच्चे ये काश ये प्रोग्राम देख लें, क्योंकि उनको दो बाबे नजर आ रहे हैं और उन्होंने सिर्फ देखना है और उन्होंने बंद कर देना कि यार इन्होंने साढ़े काम की कोई गल नहीं करनी.
but still I really want them इन्फोर्स करो उनको कि दे नीड टू सी दैट। देखें अभी पाकिस्तान, अच्छी बात ये है सर, पाकिस्तान से बाहर जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो लोग पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, वो अपने लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन ही देखना चाहते हैं, ठीक है? हाँ, देयर इज़, लेट्स बी वेरी फेयर कि आई अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें गलत होती हैं, मगर हर मुआशरे में, हर जगह, हर मुल्क में, हर मुमलिकत के अंदर कुछ ना कुछ गलत होता ही है, ठीक है? देखिए बट आप यू वांट टू सी द ग्लास हाल्फ फुल और हाल्फ एम्प्टी। मुदस्सिर साहब, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। ये नीचे भी जाती है, ये ऊपर भी जाती है। अगर आप निचाई और उसकी ऊंचाई को, ऊपर नीचे को एक्सेप्ट करके और एंटिसिपेट करके काम नहीं करेंगे, तो फिर देर इज नथिंग बट डिप्रेशन, देर इज नथिंग बट डार्कनेस। आई अश्योर यू, अल्लाह पाक के करम से पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है। दिस प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जो आप टैलेंट बात कर रहे हैं ना जी, पाकिस्तान का यंग टैलेंट, नॉट टैलेंट, दैट इज द पाकिस्तान इटसेल्फ। Agreed. That is not a talent, that is Pakistan itself. तो हमारा पाकिस्तान अगर इतना टैलेंटेड है, तो फिर तो आप जैसे और मेरे जैसे लोग रास्ते का सिर्फ इशारा करेंगे और फिर देखिए ये किधर जाते हैं। Inshallah, inshallah, इंशाल्लाह। inshallah. Janbaz sir, once again, thank you so much. जी Blast of बात है। positivity. मुझे खुशी है और मैं चाहूँगा कि ये प्रोग्राम ना बार-बार, बार-बार लोग देखें, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं आपको ऑफ ट्रैक करूँ कि ये मुल्क नहीं अच्छा, यहाँ के लोग नहीं अच्छे, यहाँ के लोग अच्छे काम करने वाले नहीं हैं। मगर आपने मुझे हर जगह पे कहा है, नहीं यार, बंदे बड़े अच्छे हैं, देखिए लोग मुदस्सिर बड़े साहब, अच्छे सॉरी हैं। टू कट यू, इन अबाउट 6.5 years I would have served my country for 40 years. I don't have much in my name. अगर आप कभी मेरा वो टैक्स फाइल देखें, तो वो मेरा पिछले कोई 3-4 साल से वो कॉपी कट पेस्ट ही चल रहा है, बिकॉज मैंने ना कुछ खरीदा ना खरीद सकता। बट गिवन मी अ चॉइस, I would sacrifice myself, my children, and everything for this country. There is no better country than Pakistan. You have no idea what a blessing it is, and you have no idea what a bright future there is. पहाड़ चढ़ते हुए पत्थर आते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप उनसे घबरा जाएं या उनको कहें कि जी ये बड़ी सख्त चढ़ाई है। वी विल गेट देयर विद गॉड्स ग्रेस, इंशाल्लाह वी विल गेट देयर। देयर इज नो डाउट इन माय हार्ट। आई विल, people, there are people like you, there are people like me, which is majority of Pakistan. We will keep putting our blood and sweat in this country's soil, so that your children's and children's future is brighter than the sun itself. और वो कहेंगे कि एक दफ़ा मुदस्सिर भाई का और जांबाज भाई का प्रोग्राम हुआ था, बहुत मज़ा आया था हमें। मेरा, मुझे कोई याद ना करे, मुझे परवाह नहीं, मेरे याद रखें सब। सर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जांबाज भाई, थैंक यू सो मच। माय मैं प्लेजर। इससे ज़्यादा मेरे पास शुक्रिया के अल्फाज़ नहीं है, बिलख़ुसूस आपके लिए, मीर भाई के लिए, पीडब्ल्यूसीटीए की टीम के लिए, टू हैव, एंड आई फील काइंड ऑफ एन एनवी कि उनके पास ना बहुत स्ट्रॉन्ग लोग बैठे हुए हैं, Excuse me, जिनका जो excuse me, you should not feel envy. I'm also there for you. I am your servant also. Your taxes जज़ाकल्लाह खैर। are paying my salary. So I'm, even if I'm sitting here, I am working for you here. Sir, you're not working for us, you're working with us, and we are working with you. Thank you. जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच Thank जांबाज you. साहब, Thank बहुत you. शुक्रिया। Allah. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान।